रब्ब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो मैं जब सुबह पहुंचा यहाँ पर, तो I wanted to see all the halls, and that's what I did. And I was really impressed by Health Asia, and I felt proud. और मैं बहुत सालों से जब दुबई की कॉन्फ्रेंस ADEC में जाता हूँ रेगुलरली, and I always feel कि हम क्यों नहीं कर सकते पाकिस्तान में. And it is very impressive कि Health Asia has improved in the last so many years, and today when I went to see the hall, it was full, which is so heartening as a Pakistani to see, to have these halls filled. हमारी इस जगह पर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी 2006 में, and that conference was only related to dentistry, और सारे हॉल फिल थे विद डेंटिस्ट्री. एंड आई होप इंशाल्लाह वन डे ये भी होगा कि दीज हॉल्स वुड बी फिल्ड विद डेंटिस्ट्री. सेकेंड, आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट सलमान साहब, जिन्होंने ये रौनक लगाई हुई सुबह 9 बजे, यानी कराची में हॉल पे लोगों को बुला लेना एक बड़ी बात है. तो कॉन्ग्रेचुलेशंस. And I would like to thank Professor Dr. Uzma, Dr. Tawseef, उनकी सारी team for organizing the event. Dr. Misha से मैं इनको बुला के पूछ रहा था इनके बारे में, and I was delighted and we would like to learn more from her because she was talking about AI involvement, and I hope to hear from her in near future as well. तो टॉपिक मेरा यार ये इससे चलेगा, ऑप्टिमाइजिंग सिंपल एक्सट्रैक्शंस. जो डेंटिस्ट है, डेंटिस्ट का ब्रेड एंड बटर है वो 5-6 प्रोसीजर्स हैं क्लिनिक पे. स्केलिंग करता है, फिलिंग करता है, एक्सट्रैक्शंस करता है, रूट कैनाल्स करता है और क्राउन्स करता है. This is the bread and butter of dentistry. When a patient walks to your clinic, they really expect the dentist to do the best job, whoever the dentist is, in these 5-6 procedures. If you're going to falter in these procedures, तो क्या वो trust level maintain होगा patient और dentist का? No. You would not have that trust. And if you would not have that trust, तो वो क्या वो मरीज तुम्हारा मुरीद बन सकेगा? The answer is no. तो मरीज को मुरीद बनाने के लिए you really have to learn the trait of these 5, 6, 7 basic procedures. तो क्या ये extractions करना आसान बात है? The answer is no. If you really want to do a good extraction, मीशा कह रही थी कि immediate implant जब लगता है ना, तो उसका पहला step क्या है? You need to extract, and the extraction has to be atraumatic. The extraction has to be aseptic. इसका मतलब है अगर आपने एक्सट्रैक्शंस अच्छी की, तो उन्होंने ये बताया था कि एक्सट्रैक्शंस अच्छी की तो you would be able to do an immediate implant. तो सारी चीज़ें goes back to the basic. तो अच्छी एक्सट्रैक्शन करने के लिए ये प्रेजेंटेशन हमारी एक रेजिडेंट है डॉक्टर आमना आफरीदी, तो आई वुड लाइक टू थैंक हर एज वेल कि उन्होंने बनाई है. तो आइडियल डेंटल एक्सट्रैक्शंस, जेफरी हाउ यूके का बड़ा मशहूर प्रोफेसर है. इसका यार ये अच्छा ये अलग है वो चीज़, ये अच्छा ये यूके के बड़े मशहूर प्रोफेसर हैं जेफरी हाउ, who wrote different books. He was a dean of Hong Kong Dental College as well. And a dental extraction is the painless removal of the whole tooth or tooth root with minimum stress to the investing tissues. So number one, it has to be atraumatic. Number two, it has to be painless, allowing for a smooth wound healing process and no post, and probably that's what you want, no post-op complications. किसकी तरफ चलना इसको
तो जब पेशेंट हमारे पास आता है तो ही हैज़ गॉट मल्टीपल प्रॉब्लम्स, मल्टीपल टाइप्स ऑफ टीथ व्हिच यू हैव टू एक्सट्रैक्ट. सामने का दांत हो सकता है, ऊपर का टूथ हो सकता है, नीचे का टूथ हो सकता है, टूथ केरियस हो सकता है, टूथ पे क्राउन हो सकता है, वेल पोजिशन्ड हो सकता है, विच कैन मेक योर सिंपल एक्सट्रैक्शंस डिफिकल्ट. तो जब बुक खोलते हैं तो सारी सर्जिकल बुक्स स्टार्ट्स विद बेसिक्स ऑफ सर्जरी एंड देन द फर्स्ट चैप्टर इज एक्सट्रैक्शंस. एक्सट्रैक्शंस को किताबें दो में डिवाइड करती हैं. एक को कहती है सिंपल एक्सट्रैक्शन, एक को कहती है, क्या कहती है? Surgical extractions, complicated extractions, open extractions. So we are not going to talk about surgical extractions today. We are going to talk about the bread and butter of the general dentist, which is closed extraction, which is closed simple extraction. And you would like to optimize your expertise, the techniques involved in close extractions. तो हमने सिंपल बातें करनी है. तो मरीज आके बैठा तो सबसे इंपॉर्टेंट बात हमेशा एक्सट्रैक्शन से पहले क्या चीज होती है? काउंसलिंग. You really want to talk to your patient. You really want to tell the patient what you are going to do, what to expect and what not to expect. पेशेंट की रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस जब आप बना देते हैं, पेशेंट का ट्रस्ट उसी वक्त से शुरू हो जाता है. The moment you would start talking to your patient about the extraction, you have to go through whatever you're going to do with the patient verbally before starting the procedure. तो प्री ऑपरेटिव असेसमेंट, मैं इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा. I would like to just talk about few points. तो प्री ऑपरेटिव असेसमेंट इज आइदर रिलेटेड टू पेशेंट और टूथ. इसमें मैं आज बात नहीं करने वाला हूँ. तो ये हमें पता है कि पेशेंट की हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है. यू रियली वांट टू टेक द हिस्ट्री. यू वुड लाइक टू टेक द रेलेवेंट हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट. द असेसमेंट, अब पेशेंट का आपने डिसाइड कर लिया है कि यू रियली वांट टू टेक द टूथ आउट. यू हैव डिस्कस इट विद द पेशेंट. सर्जरी का जब आप पहला चैप्टर खोलते हैं विच इज कॉल्ड द बेसिक्स ऑफ सर्जरी, तो वो कहता है विजिबिलिटी एंड एक्सेस. जिस चीज को आप देख सकते हैं, जिस चीज की तरफ आपकी पहुंच हो सकती है, द वर्क वुड बिकम रिलेटिवली इजी. तो एक्सेस एंड विजिबिलिटी इज द बेसिक की ऑफ द बेसिक्स ऑफ ओरल सर्जरी. तो एक्सेस का सबसे बड़ा पॉइंट क्या है? द माउथ ओपनिंग. पेशेंट का सिंपल एक्सट्रैक्शन है, माउथ ओपनिंग कम है, तो एक्सट्रैक्शन वुड बिकम इजी और डिफिकल्ट? वुड बिकम डिफिकल्ट. तो यू आर ट्राइंग टू प्रिपेयर. जब आपकी एक्सट्रैक्शन करनी होती है ना, तो आपको 3 लोगों को प्रिपेयर करना होता है, मेंटली एंड फिजिकली. नंबर 1 इज द डेंटिस्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ. नंबर 2 द पेशेंट एंड नंबर 3 द असिस्टेंट्स. ये 3 लोगों को आपको प्रिपेयर करना है बिफोर द एक्सट्रैक्शन, मेंटली एंड फिजिकली. मेंटली कैसे करना होता है? if you're expecting a difficult extraction, you're mentally preparing yourself, you're going to invest lot of time in that extraction. You're mentally preparing the patient, it is going to take time for the extraction. You're mentally preparing your assistants कि भाई फोकस हो जाओ, सारी चीज़ें रेडी कर लो, मुझे फला इंस्ट्रूमेंट चाहिए, जब मैं काम शुरू करूं तो दराजे ना खोलना. पेशेंट को अच्छा लगेगा अगर यू आर जस्ट कीप ओपनिंग द ड्रॉर्स, ये इंस्ट्रूमेंट लेकर आ रहा है, वो इंस्ट्रूमेंट लेकर आ रहा है. नो, यू वुड लाइक साइलेंस इन योर प्रैक्टिस. क्लिनिक के अंदर जो आवाज आनी चाहिए, सिर्फ 2 लोगों की आवाज अलाउड होती है. नंबर 1 इज द पेशेंट एंड नंबर 2 इज द ऑपरेटर. ना दरवाजा खुलने की आवाज हो, ना दराज खुलने की आवाज हो, ना असिस्टेंट की आवाज हो. नो, साइलेंस. Only 2 voices are allowed in a practice. किस की? Is the operator and the patient. So you are trying to mentally and physically prepare yourself, the patient and the assistant. The basic is visibility and access.
तो मैं छोटा कर रहा हूँ ज़रा प्रेजेंटेशन को। क्लिनिकल इवैल्यूएशन कैसे करते हैं? पेशेंट आके बैठ गया एंड नाउ यू आर लुकिंग एट द टूथ। आपने टूथ की पोजीशन देखनी है, टूथ को निकालना है। टूथ को निकालने के लिए डेंटिस्ट दो चीजें इस्तेमाल करता है, या तो एलिवेटर यूज करता है या फॉर्सेप यूज करता है। क्लोज एक्सट्रैक्शन में यू हैव टू यूज आइदर ऑफ द टू। तो क्या इसमें फॉर्सेप लगाना आसान होगा? No, it would be difficult. And you are trying to assess which instrument you are going to ask your assistant to provide and to set on the table. क्या इसमें forceps लगाना आसान होगा? No, it would be difficult. And you are mentally preparing yourself. You are mentally preparing the patient. See, this is an erupted tooth. You're telling your patient, but the position of the tooth is as such, it would be very difficult to apply my forceps. A simple extraction can become a difficult extraction. अगर मैं इसमें कहीं एलिवेटर लगाऊं तो क्या मैं साथ वाले दांत को डैमेज कर सकता हूं? Yes, you can. Again, you are assessing how you're going to approach, which is very important for us. ये क्या चीज है? क्या लगता है? कुछ लगता है? क्या चीज? प्रोनाउन सिंगुलर में है ना, प्रोनाउंस्ड सिंगुलर में। तो क्या इस पे फॉर्सेप एप्लीकेशन आसान होगी? No, on the palatal side you would find a problem. Whenever you're going to apply the forcep is going to slip from the palatal side. And again, a simple extraction can become difficult. But if you have assessed the patient preoperatively correctly and you have invested enough time, then you are mentally prepared yourself, your patient is prepared, and the assistant is ready with all the required instruments. इस पेशेंट की अगर मुझे एक्सट्रैक्शन करनी हो तो क्या what would I expect? आसान लगती है, मुश्किल लगती है? मुश्किल लगती है। Why? Number one, chances of fracture is high. Number two, ये केस लगता है ब्रक्सिज्म का। जो ब्रक्सिज्म होती है उसमें आपकी बोन कैसी हो जाएगी? Would become stronger. The moment you would try to extract, you would feel the resistance of the bone because the PDL, the periodontal ligament, has minimized because of bruxism. The normal leeway of PDL is not present in bruxist patients. So you need to be aware before embarking on the extraction. Grossly carious teeth. आसान होंगे, मुश्किल होंगे? मुश्किल होंगे। फॉर्सेप एप्लीकेशन मुश्किल है। दांत पे आप निकालने की कोशिश करेंगे और वो जो टूटने की आवाज आती है तो ऑपरेटर का दिल क्या होता होगा? बैठता होगा कि नहीं? एंड द मोमेंट द पेशेंट इज गोइंग टू हियर दैट नॉइज ऑफ ब्रेकिंग, उसका दिल कैसा होता होगा? दोनों का दिल एक साथ बैठता होगा कि यार गड़बड़ हो गई। लेकिन अगर इफ यू हैव काउंसल्ड द पेशेंट बिफोर हैंड कि देखो आई एम गोइंग टू टेक द टूथ आउट बट द चांसेस ऑफ ब्रेकेज इज वेरी हाई, इफ इट ब्रेक्स डोंट वरी, आई वुड टेक द टूथ आउट। नाउ पेशेंट इज मेंटली प्रिपेयर्ड कि डॉक्टर साहब ने पहले ही बता दिया है तोड़ के निकालेंगे आज, है ना? तो पेशेंट इज मेंटली प्रिपेयर्ड, विच इज सो इंपॉर्टेंट। तो रेडियोग्राफिक इवैल्यूएशन में हमने बहुत सारी चीजें देखनी है। मैं अभी आज थियोरेटिकल पे नहीं जाना चाहता। आई वुड लाइक टू जस्ट कॉमेंट ऑन फ्यू पॉइंट्स which is important. जो मेन बातें हैं रेडियोग्राफ में, especially when you're talking about lower molars, तो क्या चीज देखने की होती है? दो तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। नंबर वन, द लेंथ ऑफ द रूट। जैसे ये एक्सरे देखो ना तो सबसे पहले द टूथ यू वांट टू एक्सट्रैक्ट, यू वुड लाइक टू सी द लेंथ ऑफ द रूट। नंबर टू, the width of the root. रूट मोटी हैं या पतली हैं? रूट लंबी हैं, छोटी हैं? नंबर टू, रूट मोटी हैं या पतली हैं? अगर रूट पतली है तो एक्सट्रैक्शन आसान है या मुश्किल है? आसान है या मुश्किल है?
it becomes difficult. क्यों? If the root are thinner, then the bone is thicker. And if the bone is thicker, the root is smaller, the thinner, the moment you would try to take the tooth out, what would happen? What may happen to the root? Breakage. क्योंकि एक्सट्रैक्शन जब हम पढ़ते हैं फाइनल ईयर में तो हमें सिखाया जाता है एक्सट्रैक्शन इज अ प्रोसेस जिसमें डेंटिस्ट दो काम करता है. नंबर 1, शेयरिंग एंड टेयरिंग ऑफ PDL, शेयरिंग एंड टेयरिंग ऑफ पेरियोडोंटल लिगामेंट. नंबर 1. नंबर 2, डेंटिस्ट क्या करता है? एक्सपेंशन ऑफ द बोन. जब आप ये दो काम कर लेते हैं तो आपका दांत ढीला हो जाता है एंड इट कम्स आउट. तो डेंटिस्ट के दो ऑब्जेक्टिव हैं व्हेन यू टेकिंग द टूथ आउट. नंबर 1, शेयरिंग एंड टेयरिंग ऑफ PDL. नंबर 2, expansion of the bone. So whenever you're extracting, always remember you have to do two things to extract the tooth. Number 3, root lambi patli, root moti patli. And number 3, very important, कि root इसकी divergent है या roots आपस में करीब करीब हैं. रूट डाइवर्जेंट हैं या रूट आपस में करीब करीब हैं. कौन सा वाला एक्सट्रैक्शन आसान होता है? करीब वाला या दूर वाला? करीब वाला. नो एक्सट्रैक्शन इज इजी. नो एक्सट्रैक्शन इज इजी. All extractions are relatively difficult. So it's always a term, a relative term. But you are absolutely correct. When the roots are closer, it acts like, it behaves like a single rooted tooth. When the roots are divergent, they behave like 2 teeth, 3 teeth, and that is why the chances of breakage is high. Extraction पे आ जाए. बस अब छोटी 3, 4, 5 स्लाइड्स मेरे पास टाइम है. अच्छा, तो 4, 5 स्लाइड्स पे बात करें कि एक्सट्रैक्शन करते कैसे हैं. तो नंबर 1, अगर आप चैप्टर खोलें तो कहता है प्रोफाउंड एनेस्थीसिया. कौन सा एनेस्थीसिया? प्रोफाउंड एनेस्थीसिया. व्हाट डज प्रोफाउंड एनेस्थीसिया मीन्स? जो डेफिनेशन थी जेफरी हाउ की, वो कह रहा था पेनलेस एक्सट्रैक्शन. और यहां पर हम द टेक्स्ट बुक ऑलवेज रेफर टू एनेस्थीसिया टू प्रोफाउंड एनेस्थीसिया. ऐसा एनेस्थीसिया दो मरीज को जिसमें उसको पेन ना हो. Absolutely no pain. You need to make sure your patient should not feel pain when you have given the anesthesia. उसकी क्या ट्रिक है? जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इज द लेंथ ऑफ द रूट. तो क्या करते हैं, आपने रूट की लेंथ चेक कर ली. नाउ इमेजिन अगर मैं इसकी इन्फिल्ट्रेशन यहां पे दूंगा तो इफेक्टिव होगा? नो. The anesthesia, the infiltration has to be above the root, और नीचे की बात है तो lower to the root. अगर आपने ब्लॉक दिया है तो it has to be supplemented by intra-ligament injections. Intra-ligament जब आप लगा देते हैं तो फिर adequate and profound anesthesia achieve होता है. और patient कहेगा डॉक्टर साहब, जब उसको एक्सट्रैक्शन में दर्द नहीं होता तो वो क्या कहता है कि आपका हाथ कैसा है, हल्का है, भारी? Yes? And that is what you like to hear. अब वो मरीज से क्या बनने जा रहा है? मुरीद बनने जा रहा है. क्यों? Because the patient did not had that sensation. जब आप कर रहे थे, भले वो रूट कैनाल हो, भले वो फिलिंग हो, patient did not feel anything, and that is what the patient want, and that is what you would like to hear at the end of the treatment. तो profound anesthesia, कोई भी instrument is the extension of your hand. Whatever instrument you are going to use would become what? The extension of your hand. जितना आपके हाथ से इंस्ट्रूमेंट दूर हो जाएगा उसके ऊपर कंट्रोल ज्यादा होगा, कम होगा? कम हो जाएगा. तो remember that. The instrument becomes the extension of your hand. The longer the instrument, farther it from your hand, less control you would have on the instrument. You would like to be as close to the instrument. मरीज से दूर रहो वो एक अलग बात है, लेकिन अपने इंस्ट्रूमेंट से करीब रहना है या दूर रहना है? करीब रहना है. अपने इंस्ट्रूमेंट से you have to be very close. When you're placing the instrument, the forceps, it has to be as deep as possible. As deep as possible.
चेयर पोजिशनिंग इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट। मैं इस पर भी डिस्कस नहीं कर रहा वरना बहुत टाइम लगेगा। एक तो ये गर्मी मुझे लग रही है, ये है भी बहुत, तो तुम लोगों को औरों की भी सुननी है ना, अभी तो मैं इसलिए छोटा कर दूं इसको शिफ्ट, वरना चेयर पोजिशनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। You really want to have a good visualization. If your positioning is correct, you would have good access and visualization. The basics. जो बेसिक को फॉलो करता है उसका आउटकम अच्छा होता है। तो बेसिक क्या है? चेयर पोजिशनिंग, सर्जन पोजिशनिंग, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका बहुत ख्याल रखो। मैं इस पे भी चेयर पोजिशनिंग पे बात नहीं करता। आर्मामेंटोरियम, आई वांट टू टॉक अबाउट दिस। एलिवेटर्स, दो तरह के एलिवेटर्स डेंटिस्ट्री में सबसे कॉमन है। नंबर वन इज कूपलेंट एलिवेटर, देखा है तुम लोगों ने, विच इज द स्ट्रेट एलिवेटर, एंड द क्रायर एलिवेटर। मैं अपनी पसंद बताऊं तुम्हें कि मैं कौन सा पसंद करता हूं। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कूपलेंट एलिवेटर्स, 1, 2, 3। एलिवेटर्स के एक हैंडल होता है, एक शैंक होता है और एक ब्लेड होता है। शैंक का काम खाली ये है, इट कनेक्ट्स द ब्लेड टू द हैंडल। जब तुम एलिवेटर सिलेक्शन करो तो उसमें सबसे पहले चीज देखनी होती है द ग्रिप। यू शुड बिकम, अगर ये बहुत पतला है द हैंडल, तो वुड यू बी एबल टू ग्रिप इट बेटर? No, so you have to be very careful. Sleek handled instruments are not good. Sleek handled instruments are not very good. Number 2, अगर शैंक छोटा है तो क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है और क्या फायदा है? तो जब तुम कूपलेंट्स देखोगे ना, कोई लंबा होगा, कोई छोटा होगा, बट यू नीड टू बी अवेयर व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट। अगर शैंक छोटा सा है तो क्या डिसएडवांटेज है और क्या एडवांटेज है? इसी तरह the opposite, if the shank is longer, then what is the advantage and disadvantage? अगर शैंक छोटा है और इमेजिन करो मैं लोअर थर्ड मोलर पे काम कर रहा हूं, तो मेरा हाथ किधर आ जाएगा? would be close to the mouth or away? Close। तो क्या मेरी विजिबिलिटी होगी? No, my hand is going to cover the whole oral cavity. I won't be able to see inside. So smaller shanked instruments causes limitation in visibility, but gives you what? Good control, because the blade is closer to you. जब आप ये ब्लेड, ये शैंक को लंबा कर देंगे तो एडवांटेज क्या हो जाएगा? विजिबिलिटी बेहतर हो जाएगी कि नहीं? Yes, the visibility would be better. Your hand would be away from the oral cavity, from the mouth, but at the expense of what? At the expense of what? Less control, and the slippage becomes higher. Patient के कभी इस तरफ चोट लग जाएगी, when you're going to apply the pressure, the slippage of the instrument becomes high. So you need to be aware, whichever instrument you are taking, you need to be aware the slippage would be higher when the shank is longer. Number 2, my favorite instrument is always the smallest blade, always the smallest. I rarely use the broader end. I rarely use the broader end. So this is the commonest which I use. Why? Because the instrument has to go between the alveolar bone and the tooth. वो narrow है या मोटी है? It's extremely narrow, that space, and you really want to go inside the alveolar bone and the tooth. So you need to be aware. Point number 1, you should be aware about the shank. Point number 2, you should be aware about the width of the blade. The crier, अगर तुम ये वाला क्रायर देखो और ये वाला क्रायर देखो, कोई फर्क लगता है इनमें? ये दिख नहीं रहा, ये क्या है? आप देख रहे हैं? तो what is the difference between these two criers? What is the difference between these two criers? ज्यादातर क्लिनिक पे तुम्हें ये वाला क्रायर मिलेगा, एंड माई फेवरेट इज दिस क्रायर।
तो क्रायर कब इस्तेमाल करते हैं? व्हेन अ मल्टी रूटेड टूथ यू हैव टेकन वन रूट आउट and one of the root is present in the socket and you really want to use a wheel and axle principle, और घुमाओगे और वो रूट बाहर आ जाएगी मैजिक की तरह। लेकिन उसके लिए अगर आप ये ऑलमोस्ट 90 डिग्री वाला क्रायर इस्तेमाल करेंगे then it becomes extremely difficult. Simple काम would become difficult. It doesn't go to the base of the socket. It doesn't go to the base of the socket because of the width of the blade. ये ऊपर से उसके socket पे रुक जाती है। When you're going to use the angled one, the almost 60 degree one, which is very fine, you can use it at different angles and it can go up to the base of the socket, and when you're going to rotate, the tooth comes out easily. So my favorite is this crier. नहीं सर, ये भी वेलो वाला, पीछे भी वेलो वाला। तीसरी बात एलिवेटर के हवाले से, तो लोग जब एलिवेटर इस्तेमाल करते हैं, एलिवेटर की जो पोजीशन है, देयर आर 2 पॉइंट ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ अ कूपलेंट एलिवेटर। देयर आर ओनली 2 पॉइंट्स, 2 जगह लगाने होते हैं एलिवेटर। नंबर 1 बिटवीन द टीथ, नंबर 1, नंबर 2 ऑन द बक्कल सर्केशन। ये 2 पॉइंट हैं जिसको पॉइंट ऑफ परचेज भी कहते हैं, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी कहते हैं। तो लगाना किधर है? तो डेंटिस्ट क्या गलती करता है, एलिवेटर हमेशा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ऊपर लगाना होता है, विच मीन्स जहां 7 और 8 का कांटेक्ट है वो यहां पर है कहीं, तो आपका एलिवेटर हैज टू बी अबव, not below. And you would see many dentists, they may be able to take the tooth out, but the chances of breakage becomes high. Always the application of the elevator has to be above the contact area. अगर ये contact है तो my elevator would be here, above the contact. अगर नीचे का है तो below the contact. Remember, ये 3 बातें एलिवेटर में याद रखो। You would see ये small changes in your practice would make it so simple for you. अब 2 forceps से मुझे बात करनी है, then I will end. मैं ग्रिप की नहीं बात करना चाह रहा। I would like to talk about lower molar forceps. Lower molar forceps, lower molar forceps 2 तरह के मार्केट में मिलते हैं। एक बहुत ही बारीक सी हिंज होती है और एक में बहुत मोटी सी हिंज होती है। तो कौन सा वाला तुम्हें पसंद है? कौन सा वाला? तो जो, क्योंकि हमारी सारी जिंदगी इंस्ट्रूमेंट पे गुजरनी है, तो यू रियली शुड हैव द लाइक्स एंड डिसलाइक्स अबाउट योर इंस्ट्रूमेंट, एंड यू शुड नो योर इंस्ट्रूमेंट लाइक द एक्सटेंशन ऑफ योर हैंड। जब इंसान कपड़े पहनता है ना, तो इतना होता है यार ये पहनूंगा, वो पहनूंगा, इस तरह पहनूंगा। इसी तरह इंस्ट्रूमेंट, when you're selecting your instrument, you really have to be very critical about your instrument. I really want to use this instrument and that is the reason I would like to use my instrument. तो ये वाला जो मेरा जो पसंद का इंस्ट्रूमेंट है is this, the sleek. क्यों? Because it wraps the tooth so perfectly. It sits on the tooth. It doesn't let the tooth break. जब आप ये वाला इस्तेमाल करते हैं, नंबर 1, because you're using it in the posterior side, you really want to have a mouth opening, क्योंकि इसकी हिंज बहुत मोटी होती है। और नॉर्मली आजकल ये वाला फॉर्सेप मिलता है, और मैं हमेशा क्लिनिक पे कहता हूँ मुझे यार वो वाला ला के दो, जो कि पतला स्लीक हिंज के साथ होता है। एंड यू ट्राई दीज टू, जब तुम इस्तेमाल करो अपनी ओपीडीज में, क्लिनिक्स पे, ट्राई बोथ ऑफ देम एंड सी द डिफरेंस। मैं इस पे, this is one of my favorites. This is called a cow horn forceps. This is called a cow horn forceps, which makes your extraction so simple. तो करते क्या है इसको? अब काउ हॉर्न मार्केट में 2-3 तरह का मिलता है। नंबर 1, एक काउ हॉर्न की बीक्स ऐसी हैं, एक काउ हॉर्न की बीक्स ऐसी हैं, और एक काउ हॉर्न की बीक्स ऐसी हैं। कौन सा वाला खरीदोगे? यूज कौन सा करोगे? ऑल 5 किधर है यार? डॉक्टर सैफुल्लाह कह रहे हैं कौन सा वाला? ये वाला? ये डॉक्टर सैफ, अगेन इंस्ट्रूमेंट डज नॉट मीन कि जो मैं कह रहा हूं ठीक है, मैं तो तुम्हें अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं, है ना।
I would like to have the maximum edge, which is this one, जो बिल्कुल C. अगर तुमने काउ हॉर्न किससे बना है, यानी कॉन्सेप्ट क्या है, किसके हॉर्न्स हैं, काउ के हॉर्न्स हैं, तो काउ के हॉर्न्स, ये वाले हॉर्न्स मुझे पसंद हैं. ये करता क्या है, ये इंटरडेंटल में जाके बैठ जाता है. तो एक्सट्रैक्शन जब करते हैं तो इसका प्रिंसिपल समझ लेना चाहिए. तो प्रिंसिपल क्या है इसका? Number one, when a patient comes to you, you have to look for the divergent roots, which are difficult extractions. और जब ये आप इस्तेमाल करते हैं तो ऐसा होता है, the tooth automatically comes out without anything, without any movement. The tooth would come out, and you would be surprised when you're using a cow horn in a difficult patient, and the tooth just simply comes out. तो क्या करना होता है? Patient आके बैठा, and they're grossly carious teeth and you're expecting them to break. तो आपने अपने असिस्टेंट को पहले से बता दिया, देखो यार डिफिकल्ट टूथ है. अपने पेशेंट को कहा इट्स अ डिफिकल्ट टूथ, द चांसेस ऑफ ब्रेकेज इज हाई. असिस्टेंट से कहा मेरा काउ हॉर्न रेडी कर दो, वो वाला काउ हॉर्न जो मैं इसके लिए इस्तेमाल करता हूँ. कौन सा वाला जिसकी बीक्स कैसी है? The round, the C shape. तो पेशेंट आके बैठा, profound anesthesia you have given. Now cow horn की application का तरीका क्या है? You would like to see the furcation area. The furcation area is hidden by the gum. Is hidden by the gum clinically. तो आपने क्या करना होता है? Periosteal elevator ले लो, probe ले लो. You would like to retract the gingiva a little bit, and you would like to see the furcation. The moment you saw the furcation, आपने काउ हॉर्न बिठाया, एक एज इधर फंसा दी, एक एज उसकी लिंगुअली फंसा दी. अब कुछ नहीं किया, अब आपने उसको फंसा दिया खाली. And now no buccal force, no lingual force, no rotation, nothing. अब उसको आपने स्क्वीज करना शुरू कर दिया, सिर्फ दबा दिया. हैंडल्स को क्या करना शुरू कर दिया? Squeeze. To squeezing movement. The moment you would start squeezing, what is going to happen? What is going to happen? क्या होगा? Sharing and tearing of the PDL. क्या वो एक सेकंड में हो जाएगी? No. आपने ये स्क्वीज करना है for 30 seconds minimum. Nothing will happen. Nothing will happen for the first 30 seconds, 40 seconds, 45 seconds. And suddenly, you would feel the extrusion of the tooth a little bit. You would feel the extrusion of the tooth, not initially, but after 30 seconds, 40 seconds, 45 seconds. And you keep squeezing. अभी आपने कोई मूवमेंट नहीं लगाई है. एंड द मोमेंट यू सॉ द एक्सट्रूजन, अब आपने उसको हल्का सा रोटेट करना है मीजियोडिस्टल, एंड द टूथ वुड पॉप आउट, एंड यू वुड बी सरप्राइज्ड बाय योरसेल्फ कि यार ये इतनी आसान एक्सट्रैक्शन थी. और अब पेशेंट जो मरीज था वो क्या बन गया? वो तो कह रहा, आपने तो उसको अभी क्या बताया था, ये एक्सट्रैक्शन आसान है मुश्किल है? मुश्किल है. And the extraction has become so easy. Why? Because your assessment was correct, because your instrument selection was perfect, and because there was no noise in the clinic. दराज़ें नहीं खुली, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट टेबल पे नहीं आके सजे. Surgery is all about minimal instrumentation. Minimal instrumentation you have to use on a patient, and that is how you make those patients. मरीज को मुरीद बनाने के लिए you have to do the pre-op assessments correctly. दूसरा forceps, last forceps नहीं, ये पेशेंट की ये केस बता दूं. एक पेशेंट एक्सट्रैक्शन कराने गया बड़े अस्पताल में. यार ये वीडियो चल सकती है बेटा? ये वीडियो चल सकती है? अपर 6 की कराने गया, देखो चले. तो वो अपर 6 की एक्सट्रैक्शन कराने गया, और पे ही केम सेम डे टू मी, और उसका 6 और 7 बोथ वर मोबाइल. नॉट ओनली द 6, कौन कौन से टीथ वर मोबाइल? 6 and 7 वर मोबाइल. तो इसकी वीडियो हमने बनाई थी. तो प्रॉब्लम क्या हुआ? तो किताब जब फोर्स की बात करती है तो किताब कहती है द टेक्स्ट बुक refers force as controlled force. तो डेंटिस्ट को एडवाइस करती है टेक्स्ट बुक, जब मरीज पे फोर्स लगाओ तो कौन सी फोर्स लगाओ? कंट्रोल्ड फोर्स.
ऐसी फोर्स ना लगाओ which is not under your control, because the uncontrolled forces, what they normally do, they break the tooth, they break the bone, they break the tuberosity, and that is what happened in this patient. Last forceps कि ये इस पेशेंट का एक्सरे, वो गया था ये टूथ निकलवाने, लेकिन उसका फ्रैक्चर यहां से यहां तक हो गया. The last forceps is upper cow horn. Upper cow horn forceps कहाँ दिखाया इन्होंने? पता नहीं कहाँ चला गया. मुझे दो चीजें और डिस्कस करनी थी, लेकिन आई थिंक दैट्स ओके. आई वांटेड टू डिस्कस हाउ टू टेक द लोअर प्रीमोलर्स आउट. लोअर प्रीमोलर्स अगर टूट जाते हैं तो दैट कैन बिकम द मोस्ट डिफिकल्ट एक्सट्रैक्शन. वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एक्सट्रैक्शंस लोअर प्रीमोलर. हालांकि लोग सोचते हैं इतना आसान है, एंड लोअर प्रीमोलर्स कैन बिकम एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, क्योंकि मेंटल नर्व साथ में होती है एंड यू नॉट श्योर कितना मैं ट्रिम करूं, तो उसकी एक्सट्रैक्शंस एट्रॉमेटिक करना बहुत ज़बरदस्त सिंपल काम होता है. लेकिन अब टाइम असल में बहुत हो गया ना. कितना टाइम हो गया? तो गर्मी बहुत है यार, तुम लोग कैसे बैठे हुए उस पर? तो I hope that I was able to communicate the importance of simple extractions in dentistry. Simple को लफ्ज़ वो वाला simple नहीं है क्योंकि किताब इसको simple कहती है, तो I'm referring it to as a simple extraction. All extractions are difficult unless the tooth comes out atraumatically, painlessly, aseptically. Thank you very much.